तो हेलो गाइस, वेलकम टू iCreative Hub। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल अबाउट हाउ टू ऐड रियलिस्टिक लाइक लिपस्टिक टू दिस इमेज। सो मैं क्या करूँगी, थोड़ा जूम कर लूँगी एंड आई कैन सिलेक्ट दिस लिप पार्ट by clicking on this pen tool, and I'll select this one. So guys, you can use your favorite selection tool. So many options are there. You can use quick selection, but it depends how much perfectly you are doing. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट कर लिया एंड इसको ज़रूरत नहीं है मुझे। Then I'll subtract this one and control। तो थोड़ा मैं यहाँ पे फेदर 1 पिक्सल I will give and control enter। तो ये सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप कर सकते हो अच्छे से थोड़ा सा। And again if I select perfectly, so again I am just selecting this one। So guys, you can use your favorite selection tool, quick selection or magic wand, but I am preferring this pen tool। And I don't need this part, so after selecting I can give subtract, and I will give 1 pixel feather, then control enter, या एंड अगर मैं ब्रश से करूँगी तो ये थोड़ा गंदा दिखेगा। ब्रश में करके मल्टीप्लाई देने में पूरा डिटेलिंग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, सो दिस इज द मैजिक। You can go to this solid color, and this part selected already. You can use your favorite color, so I have chosen red, and here multiply, and here you can double click on this layer, so layer style is coming, and here you can adjust underline layer। so ये ऑप्शन थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप alt, if you are pressing alt and just click on it, it divide into 2 parts, और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते। देखो कितना रियलिस्टिक जैसा दिख रहा है, ठीक है। So like this you can create mid tones, like highlight and shadows। so मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा डुप्लीकेट करके और थोड़ा यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके थोड़ा सा, so again I am adjusting this one। so guys, you can try on this, I hope you like it। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन कर दूँगी इसको, देखते हैं कितना अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। So guys, try this method to use highly realistic lipstick you can add to any image। So guys, thank you, see you in the next video।